وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inshallah, we begin from verse number 54. But before that, in the last class, what we had studied was when the messenger came to Yusuf al-Islam and told him that the Aziz is wanting him to come, but Yusuf al-Islam refuses until a clarification is got about the environment outside. For Yusuf al-Islam did not want to put himself into further peril. And when the Aziz clarifies about this matter with the women, they all confess that they were only at fault and Yusuf al-Islam was absolutely innocent. To the extent that even the wife of Aziz says, Innahu lamina sadiqin, verily he was among the truthful. And Yusuf al-Islam's excellent statement expressing his humility and his outstanding character, as is always, Wama ubaryu nafsi. He says, I too, a human being at the end of the day. I too am a human being at the end of the day. And this nafs always incites towards evil, except on whom Allah subhanahu wa ta'ala had mercy, and verily Allah subhanahu wa ta'ala is most forgiving, most merciful. We stopped there, and there we begin from verse number 54. I seek your undivided attention for the next 45 minutes and pray to Allah subhanahu wa ta'ala to make this session most productive and helpful and beneficial to each one of us. Ameen Ya Rabbal Alameen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. And said the king, bring him to me, أستخلصه لنفسي, I shall make him exclusive for myself. فلما كلمه, then when he spoke to him, that is when the king spoke to Yusuf al-Islam, he said, إنك اليوم, verily you are this day, لدينا, near us, makinun amin, high in rank, amin, trustworthy. और कहा बादशाह ने ले आओ उसको मेरे पास, मैं खालिस कर लेता हूँ उसको मेरे खुद के लिए. फिर जब बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कलाम किया तो कहा, बेशक आप आज का दिन हमारे यहाँ बड़े मर्तबे वाले और अमानतदार हो. So now the king, on being totally convinced that Yusuf al-Islam is a man of wisdom, a man of knowledge, and a man of humility, a man of farsightedness, a man of vision, a man of kindness, and a man of absolute honesty. And this kind of intellectual brilliance, when the king could identify in the character of Yusuf al-Islam, he had no hesitation to declare in public that Yusuf al-Islam stands vindicated and his position is now exalted and he holds a high rank in the ministry of Egypt, for he is the most trustworthy among all. But this kind of a declaration made the Aziz, which the Aziz made, proves how a Muslim, a believer, through his hard work, through his honesty, through his sincerity, through Iman and Taqwa, can reach the highest position both in this world, and for such believers, their high position in the hereafter also lies assured. इससे हमें ये सबक मिलता है कि हर कोई मुसलमान, हर कोई मोमिन, without giving any excuses, बगैर कोई बहाने देते हुए या किसी और पर उंगलियां उठाए हुए, अपनी कोशिश, लगन और अपने अखलाक और किरदार और अपने इल्म, हिकमत, दूरअंदेशी
और ये तमाम जो बेहतरीन सिफात एक इंसान के पास हो सकते हैं और इसको ये पैदा कर सकते हैं, और सबसे अहम चीज़ था ईमान और तक़वा। तो फिर एक मुसलमान जो है दुनिया में भी जो है कामयाब हो सकता है और आखिरत में भी कामयाब हो सकता है। बट द मोमेंट वी स्टार्ट फाइंडिंग फॉल्ट, ब्लेमिंग अदर्स और गिविंग ऑल काइंड्स ऑफ एक्सक्यूजेस or pointing fingers at others without introspecting on their own lives, then nothing can be achieved. The moment you have dedication, commitment, and a goal and a mission and a purpose of life absolutely intact with clarity, and you set your goals high and work towards it with the help of Allah, nothing is impossible. Nothing is impossible. And that's a big lesson for the young generation. Particularly the parents need to encourage their children to grow to such heights, giving them all the support. And very important is to empower them with iman and taqwa, which are very, very important core values for anyone to be successful in this world and in the hereafter. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. Yusuf alayhi salam said, appoint me over the treasures of the land, or the storehouses of the land. Verily, I can be its guardian and I have knowledge. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ, and thus we established for Yusuf alayhi salam in the land, يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء, he could move about freely in it wherever he wished. نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاء, we bestow our mercy on whomever we wish. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, and not we let go waste the reward of the muhsinin, good doers. And surely the reward of the hereafter is far better for those who strongly believe in Allah and are God conscious. यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुकर्रर करो मुझे जमीन के खजानों पर, बेशक मैं हिफाजत भी करूंगा और मैं इसकी का इल्म भी रखता हूं। और इसी तरह हमने इख्तिदार बख्शा जमीन में, और इसी तरह हमने इख्तिदार बख्शा यूसुफ के लिए ज़मीन में। वो चल फिर सकता था वहाँ पे जैसे वो चाहे, या जगह बना सकता था जहाँ पे वो चाहे। इसी तरह हम अता करते हैं हमारी रहमत जिस पर हम चाहे, और नहीं हम ज़ाय होने देते अजर नेकोकारों का। और ज़रूर अजर आखिरत का बेहतर है उन लोगों के लिए जो ईमान ले आते हैं और वो तक़वा की ज़िंदगी गुजारते हैं। नेकी करोगे, नेकी का बदला दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। और ऐसे नेकोकारों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी अजर ज़ाय होने नहीं देगा। You and I may forget what we have done good to anybody. You and I may forget after a short while. We may have helped somebody, we may have spoken some words of comfort to release someone from stress. We would have given charity to some deserving people, or fed the hungry, or done any kind of a good for that matter. But after some time, we may have forgotten. But Allah subhanahu wa ta'ala never forgets to put it on record. And Allah subhanahu wa ta'ala is so meticulous in returning the good you have done so well that you yourself will be surprised as to how certain good things have come to you. तुमको खुद नहीं पता चलेगा कि कैसे जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी खुशियां, तुम्हारे सुकून के मुख्तलिफ असबाब पैदा कर रहा है। आप और मैं नेकियों का काम करते होंगे, किसी की मदद किए होंगे, खिदमत किए होंगे, किसी का दुखड़ा जब वो रोते थे तो हम उनको तसल्ली दिए होंगे, या किसी को सदका और खैरात दिए होंगे, या किसी गरीब को खाना खिलाए होंगे, या कुछ भी काम किए होंगे नेकी का जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत पसंद है, खालिस अल्लाह को खुश करने के लिए।
तो ये नेकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़ाय होने नहीं देगा, ना दुनिया में ना आखिरत में. And this we have strong faith, and we need to have strong faith. Helping somebody, extending support to someone, guiding someone, giving good advice to someone without being harmful to anyone. Today's world is such that even if you can't do anything good, at least don't do harm to anyone. आज के ज़माने में लोग ऐसे हैं कि हमारा बुरा ना चाहे तो कम से कम, हमारे को फ़ायदा नहीं पहुंचा तो कम से कम नुकसान ना पहुंचाए. आज ऐसी हालत है. But we have to rise above the others, particularly we as students of the Quran. We need to emulate the excellent and outstanding character of Yusuf alayhi salam, and needless to say, the excellent character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. How they were benefactors to humanity, how they were so sharing and caring with others. And Allah subhanahu wa ta'ala promises that He will never let go waste of the rewards of such good doers. And Allah also goes on to say in the same breath कि आखिरत का अजर इससे कहीं कहीं बेहतर है. This is just a temporary good which has come back to you from Allah, but the larger rewards are preserved with Allah in the hereafter, particularly for those people who strongly believed in Him, who strongly had faith in Him, and who led God-conscious lives, irrespective of whether the world would appreciate, whether the world would give recognition or not. As long as Allah was happy, they went on to do a lot of good things and stayed away from Allah's displeasure, stayed away from haram, stayed away from disobedience to Allah. इसी को कहा जाता है तक़वा, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डर कर जिंदगी गुजारते हैं. चाहे दुनिया इनको फायदा पहुंचाए, इसको इनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करे या ना करे, बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको अल्लाह के इल्म में आ गया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको कबूल कर लिया, तो ये इनके लिए काफ़ी है. और हर किस्म के नाफरमानी के काम, मासियत के काम, हराम से जिंदगी को बचते बचाते हुए वो गुजर गए, ऐसे लोगों का अजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर दुनिया और आखिरत में अता फरमाएगा. अल्लाह हम सबको इस फहरिस्त में शुमार करे, आमीन. वजा इख्वतु यूसुफ फदखलु अलैहि फअरफहुम वहुम लहु मुनकिरून. And came the brothers of Yusuf, then they entered before him. فَعَرَفَهُمْ, then he recognized them. Who recognized them? Yusuf alayhi salam recognized them, while they to him, munkirun, did not recognize. और आए यूसुफ के भाई, फिर दाखिल हुए उसके सामने, तो यूसुफ अलैहि सलाम ने उनको पहचान लिया, लेकिन वो नहीं उसको पहचान सके. वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम क़ालतूनी बिअक़िल लकुम मिन अबीकुम अला तरोना अन्नी ऊफिल कैला व अना खैरुल मुनज़िलीन फ़इल्लम तातूनी बिही फला कैला लकुम इंदी फला तक़रबून क़ालू सनुराविदु अन्हु अबाहु व इन्ना लफ़ाइलून. And when he furnished them with their provisions, Yusuf alayhi salam said, "Bring to me a brother of yours from your father. Do not you see that I give full measure, wa ana khairul munzilin, and I am the best of hosts. But if not you bring him to me, fala kaila lakum, then no measure for you. Fala kaila lakum indi, no measure for you near me, and not you come near me." Halu, they said, that is the brothers said, "Sanuravidu anhu abahu wa inna lafailun." Soon we shall try to get permission from him for his father, and verily we surely shall do. फिर जब उसने उनके सामान भरकर दे दिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ले आओ तुम्हारे भाई को तुम्हारे अब्बा से. क्या नहीं तुम देखते कि मैं पूरा देता हूँ गल्ला और मैं बेहतरीन मेहमान नवाज हूँ. फिर अगर नहीं लाओगे तुम उसको मेरे यहाँ, तो नहीं तुम्हें गल्ला मेरे यहाँ और ना तुम मेरे करीब भी आना. भाइयों ने कहा, अनकरीब हम इजाज़त मांगेंगे उसके बारे में उसके अब्बा से, और बेशक हम ज़रूर
कोशिश करेंगे. Yusuf al-Islam obviously would have began a conversation with the brothers since he recognized them, but the brothers did not recognize. Using this as an excellent opportunity, Yusuf al-Islam would have engaged with a conversation with his brothers. बातों में पूछे होंगे, तुम कितने भाई हो, तुम कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या जरूरत पड़ी तुम्हें इधर आने को. और गल्ला देने के वक्त पे हेड काउंट पर गल्ला दिया जाता है, कितने अफराद हैं फैमिली में उसके मुताबिक जो है गल्ला दिया जाता है. तो एक पूरी जो है डिटेल्स यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे मांगे होंगे. Why did you come here? What is the necessity for you to come here? How many are there in your family? How many members are there? You have come, but who's left at home? Etc. etc. So obviously they would have said, we have an old father who's the Prophet of Allah, Yaqub alayhi salam. All this comes in the tafsir, not my stories. Huh? And then we are totally 12 brothers. One brother got lost in the desert. And the youngest one, who's also equally dear to our father has remained with him. And we 10 brothers have come here. But we seek provision for 12 totally, 10 of us, our youngest brother and our father, so 12. So kindly give us provisions for 12, etc. They would have requested or proposed for all this. In the process, Yusuf al-Islam is trying to engage them in a conversation to get all the details from them. Not that Yusuf al-Islam does not know. Now Yusuf al-Islam knows where to fix them. अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता चल गया आप कैसे जो है इनको अटका सकते हैं. अब कहते हैं और इनको मालूम पूरी तरह से how much mischief they played with his own life. And therefore now Yusuf al-Islam puts a condition. Next time you come to me for provision, with the condition that you will bring your youngest brother along with you. And I don't care whether you will get permission, not get permission. Well, if you're interested in getting the provision, then this is the condition. And this condition has to be fulfilled. एक शर्त से जो है मैं तुम्हें गल्ला आइंदा बार दूंगा, बशर्ते कि तुम्हारे सबसे छोटे भाई जो तुम्हारे अब्बा जान के साथ हैं उसको ले आना. अब मुश्किल है, नहीं मुश्किल है, क्या होगा ये मेरे को नहीं मालूम. बस इसी शर्त के साथ तुम्हें जो है दोबारा गल्ला मिलेगा. तो भाई जो है अटक गया, बोलते हैं हम कोशिश करेंगे वगैरह वगैरह. वखाला लिफित्यानिही जअलू बिज़ाअतहुम फी रिहालिहिम लअल्लहुम यारिफूना इदन क़लबू इला आलिहिम लअल्लहुम yarji'un. And he said to his servants, who said, Yusuf al-Islam said to his servants, put their merchandise fi rihalihim, in their bags, so that they may recognize it when they return to their families, la'allahum yarji'un, so that they come back. इदन क़लबू इला अहलिहिम लअल्लहुम यरजून. यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खादिमों से कहा, डाल दो उनकी पूंजी उनके बोरियों में ताकि वो पहचान ले उसको जब वो लौटेंगे अपने घर वालों के पास, ताकि वो दोबारा आए. फलम्मा रजाऊ इला अबीहिम क़ालू या अबाना मुनिया मिन्नल कैलू फारसिल माना अखाना नक्तल व इन्ना लहू लहाफिजून. Then when they returned to their father, they said, Ya Abana, O our father, Munya minnal kail, has been prevented from us the measure. Farsil mana akhana, so send with us our brother. Naktal, we shall get the measure. Wa inna lahu lahafidun, and verily we surely shall safeguard him. फिर जब वो लौटे अपने अब्बा के पास, उन्होंने कहा, ए हमारे अब्बा जान, मना कर दिया गया हमसे गल्ला, या रोक दिया गया हमसे गल्ला, बस भेजो हमारे साथ हमारे भाई को, हम गल्ला ले आएंगे और बेशक हम जरूर उसकी हिफाजत भी करेंगे. क़ाल हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अख़ीहि मिन क़ब्ल फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन. Yaqub al-Islam asked, हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अख़ीहि मिन क़ब्ल.
shall I trust you about him except as I trusted you about his brother from before? Fallahu khairun hafiza. So Allah is the best guardian. Wa huwa arhamur rahimin, and he is the most merciful on those who show mercy. याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं तुम पर भरोसा करूं उसके बारे में सिवाय जैसे मैंने भरोसा किया तुम पर उसके भाई के बारे में इससे पहले? बस अल्लाह ही बेहतरीन मुहाफिज और वही सबसे ज्यादा रहम फरमाने वालों में से। एक बुनियादी सवाल याकूब अलैहिस्सलाम ने उठाया, तुम कहते हो बिन्यामीन को भी ले जाओगे, तुमने इससे पहले यही अल्फाज कहे वइन्ना लहू लहाफिज़ून वइन्ना लहू लनासिहून, इस किस्म के अल्फाज तुमने पहले भी इस्तेमाल किए हो। किस बलबोते पर मैं तुम पर भरोसा करके बिन्यामीन को तुम्हारे हवाले करूं? On what basis shall I trust you? You are the same fellows who had mentioned the same words, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ earlier regarding Yusuf alayhi salam. So on what basis you want me to trust you regarding Binyamin now? But at the same time, I have no other option than to turn towards Allah, for He is the best guardian. If He wants to safeguard someone, nobody in the world can harm. And Allah's mercy, His compassion, His kindness is unmatched. How much I have love and mercy upon Yusuf alayhi salam, Allah has multiple more number of times mercy upon His creatures. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ. وَلَمَّا فَتَحُوا, and when they opened matahum, their belongings, wajadu, they found their merchandise ruddat ilayhim, returned to them. They said, Ya abana ma nabghi, O our father, what more can we wish for or seek? This our merchandise ruddat ilayna, has been returned to us. Wa namiru ahlana, and we shall get the measure for our family. Wa nahfazu akhana, and we shall safeguard our brother. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ, and we shall get an increase of a camel's load. That is a measure, yasir, easy to get. और जब उन्होंने खोला अपने सामान को, उन्होंने पाया अपनी पूंजी लौटा दी गई उनकी तरफ। उन्होंने कहा, ए हमारे अब्बा जान, हमें और क्या चाहिए? ये हमारी पूंजी हमें लौटा दी गई और हम गल्ला ले आएंगे हमारे घर वालों के लिए और हम हिफाजत करेंगे हमारे भाई को, और हमें मजीद ऊंट भर गल्ला भी मिलेगा और ये गल्ला हमें आसानी से हासिल हो सकता है। This way they got an additional reason to convince their father. See, the merchandise also has been returned. Now we can use the same merchandise once again to go and fetch some more provisions, provided you send our brother along with us. In that case, we'll get an additional camel's load of measure for Binyamin as well. So this is the way they try to convince their father. قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ. Yaqub alayhi salam said, never I shall send him with you hatta tutuni mawsiqan min Allah, until you bring me a solemn covenant from Allah, or solemn covenant in the name of Allah. Surely you will bring him to me, except that you have been surrounded by some misfortune. Then when they brought him their solemn covenant, Yaqub alayhi salam said, Allah, He is upon what we say, Wakil is our protector. याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज मैं नहीं भेजूंगा उसको तुम्हारे साथ यहाँ तक कि तुम ले आओ एक पुख्ता इकरार अल्लाह के नाम पर। जरूर तुम ले आओगे उसको मेरे पास
सिवाय अगर तुम घेरे जाओ। फिर जब वो ले आए उसके यहाँ अपना पुख्ता इकरार, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ही है जिस पर जो अल्लाह ही है जो हम कहते हैं उसका उसका गवाह या उसका कारसाज। याकूब अलैहिस्सलाम could only do what best is possible in that situation. And Yaqub alayhi salam also knows that there is no guarantee that in spite of giving the solemn oath in the name of Allah, whether they will honor it. अल्लाह के नाम पर पुख्ता इकरार देने के बावजूद ये कोई भरोसा नहीं कि ये बेटे उनके उस इकरार के पाबंद होंगे या उस पर अमल करेंगे। याकूब अलैहि सलाम knows that as well. But that is the maximum that Yaqub alayhi salam could do in that given situation. So he says, Allah ma naqulu wakil. जो कुछ हम कहते हैं, जो कुछ हम तय कर रहे हैं, whatever undertaking we are giving to each other, फिर Allah subhanahu wa ta'ala is a witness. He only is the disposer of the affairs. Ultimately upon him only I have put my trust. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. And when they entered from where commanded them their father, not he could avail them against Allah anything except hajatan fi nafsi Yaqub, except a desire in the heart of Yaqub alayhi salam, which he fulfilled it. And verily he is the possessor of knowledge of what we provided him knowledge, and but most of them or most of the people not they know. और जब वो दाखिल हुए जहां से हुक्म दिया उनको उनके अब्बा, हालांकि नहीं वो फायदा पहुंचा सकते थे उनको अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी, सिवाय एक हाजत थी याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में जो इसने पूरा किया। और बेशक वो इल्म वाला था इससे जो हमने इल्म सिखाया उसको, लेकिन अक्सर लोग नहीं वो जानते। Now there's a very important lesson for you and I before I conclude, which I wish to share with all of you. कुछ बातें हैं जो हमको इन आयतों से हासिल करने के, वो ये है कि नजर बद एक हकीकत है। किसी की बुरी नजर लग जावे ये एक हकीकत है। और इन आयतों से ये मालूम होता है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने नहीं चाहा कि उनके सब 11 के 11 बेटे एक ही दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि ये एक अजनबी शहर से आ रहे थे। इन मिस्र वालों के लिए वो अजनबी थे और अजनबी शहर से आ रहे थे, और सब बड़े ऊंचे खत के, खूबसूरत देखने में, और एक ही दरवाजे से अगर सब दाखिल हो जाएंगे तो they will come under the radar, they will come under scrutiny, they will be put into intense verification process, or they may be even branded as spies. Anything could happen. So Yaqub alayhi salam did not want to take any chances, so he gives this advice to the sons that all of you do not enter together through a single gate, but divide yourselves into small groups and enter through various gates of Egypt, so that you can go unnoticed and you can remain safe. At the same time, an evil eye should not fall on you on account of your personality, on account of your height, and you're looking so fair, and you come from an unknown place to a land where the people do not know you. So to avoid all those issues which may crop up, this is the best advice that Yaqub alayhi salam could give to his sons. देखिए कितना जो है वो एहतियात ले रहे हैं याकूब अलैहिस्सलाम। हालांकि अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर यकीन एक नबी से बढ़कर किसके पर हो सकता है? Though putting the trust on Allah, having faith in Allah, and having strong iman in Allah, who can be better than a prophet in this particular matter? But still, Yaqub alayhi salam is using all that intellect and the knowledge which Allah provided him, and wanting it to be shared with his sons so that things should go safe. Now, this is a very important point which Allah is making over here, is that how Yaqub alayhi salam took those precautions. And at the end of the day, what does Yaqub alayhi salam say?
in spite of me taking all these precautions, मेरे इन तमाम एहतियात लेने के बावजूद और तुमको ये नसीहत करने के बावजूद, ये कोई भरोसा नहीं, गारंटी नहीं कि तुम जो है फिर भी अगर अल्लाह चाहे तो तुम जो है सेफ रह सकते हो, तुमको अमन नसीब हो सकता है, ये कोई गारंटी नहीं। एहतियात लेना हमारा काम है, फिर बाकी अल्लाह पर तवक्कल। इसी को कहते हैं ऊंट बांधो और फिर अल्लाह पर भरोसा करो। एक सहाबी आया अल्लाह के रसूल के पास, अल्लाह के रसूल ने पूछा तुम कहाँ से आए हो? फलान जगह से आया हूँ। किस में आए हो? सवारी पर आया हूँ। कौन सी सवारी? ऊंट पर। कहाँ है ऊंट? छोड़ दिया उसको अल्लाह के भरोसे पर। अल्लाह के रसूल ने कहा ये बेवकूफ़ी है, जाके ऊंट को बांध दो और फिर उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करो। वी नीड टू डू आवर होमवर्क, वी नीड टू डू आवर पार्ट ऑफ द वर्क, वी नीड टू पुट इन आवर एफर्ट्स, वी नीड टू डू आवर जॉब and fulfill our responsibilities. After that, we need to ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep us, to grant us success. That's the best way forward, and that is what is called as trust and tawakkul. Tawakkul is not just leaving everything to Allah and saying Allah will take care. Nothing will move, nothing will happen. You will remain where you are. कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, हलाल रोजी की तलाश में दौड़ धूप करेंगे, फिर उस पर अल्लाह के बाद भरोसा करेंगे, अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो कामयाबी मिलेगी। कुछ नहीं करेंगे, घर बैठे सब कुछ मिल जाने का, ये तो ख्वाब ही है। We know that. And we have another bad habit within us is forwarding every message that we receive, to the extent that we even share our private lives with others. Why? What's the necessity? Today it's a dirty world. People may smile at you, laugh at you, compliment you, appreciate you in front of you. But in the heart of hearts, how much of jealousy, envy and hatred they may be nurturing against you, nobody knows except Allah. Why give room? क्यों मौका देते हो लोगों को तुम पर नजर डालने का? तुम जो है अच्छा खाते हो, पीते हो, अपने घर वालों के साथ सुकून के साथ रहते हो, और तुम जो है तुम्हें अच्छी चीजें हासिल भी होते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम से। अल्लाह का शुक्र अदा करो। फौरन फोटो उठाना, भेज देना, मैं हम लोग फैमिली के साथ यहाँ गए, वहां खाए, वहां पिए, ये करे वो करे। क्या जरूरत? नजर बहुत बुरी चीज है, और आज अच्छों से भी जो है हम उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि वो हमारे बारे में अच्छा खैर खाई करे या अच्छा सोचे। The best of the people also, we can trust them today that they will be our sincere well-wishers. Everybody will smile in front of you, compliment you, appreciate you, and speak big about you. But who knows what is transpiring in their hearts and minds? Nobody knows except Allah. Why give room for all this to unnecessarily cause harm to yourself? And you are inviting harm through your own foolish methods or your foolish ways. And always make sure that you and your family members, all of us, ensure that we recite Surah Falaq, Surah Nas morning and evening and blow it upon ourselves. So this is the best fortification method. Well, only this dua and this surah will not help. Accordingly, we must know how to conduct our lives in this world. In matters of good things, do it silently. Even there, the people will envy you, feel jealous of you. And at the same time, whenever you are having a good time, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you with His blessings, be thankful to Allah. Don't keep sharing all your private affairs with others. And this disease of forwarding or taking selfies or forwarding such kind of functions and occasions before people unnecessarily, well, if it's a necessity, no problem. Unnecessarily is to be strictly avoided. And this is what message we get out of these two verses, where Allah subhanahu wa ta'ala says the kind of precautions that Yaqub alayhi salam is saying. He doesn't want them to fall under the evil eye of the people. So he asks them to go to different gates, gives them all the precautions. But at the same time, the kind of trust that he puts in Allah, and again tells very clearly, nothing can work until Allah does not wish. But if Allah has decided something, we have to accept the verdict of Allah. Best of the messages, one among them which we have received today. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to study Surah Yusuf very carefully and analyze it in a manner as it should be analyzed, in order that we may derive the best message out of this. And we pray to Allah to help us practice in the right perspective and emulate the excellent and outstanding character of Yusuf alayhi salam and Yaqub alayhi salam. Ameen wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.